friend, welcome to my YouTube channel. In this channel we will learn about the folds, parts of the folds, and this lecture is very important for upcoming GATE exam. And now let's start. Before starting, if you are new on my YouTube channel, please like, share and subscribe. First, starting with the folds definition. Folds are visually the most spectacular of the Earth's structure. They are extraordinary displays of restraint, conspicuous natural images of how the original shapes of the rock bodies change during the deformation. There are certain processes involving the fold. First, folds are non-planar structure formed due to the application of the deformation. It shows the ductile behavior of the rock. It means that it is formed under subsurface of the rock. Formed under the subsurface of the earth. Now coming to the parts of the fold. There are many parts of the fold. There are many coming parts of the folds. First, the crest and through. Crest are the high points and through the low points on the curve, and crest line also are the parallel to the axis. These are the crest and this is the through. The highest point in the fold is the crest and the lowest point in the fold is the through. Next is limb or flap. Limbs are the plank of the fold is sloping side from the crest to the through. It is formed at the side of the fold, and this is the limb. Next is the interleave angle. An important character of the fold shape is the interleave angle theta, defined as the minimum angle between the limbs, are measured in the profile plane or alternatively between the lines tangent to the curve at the inflection point. This angle describes the tightness of the fold. For general purpose, however, it is open, sufficient to categorize the angular relations between the fold limbs with the descriptive adjectives. First, the gentle. The interleave angle is these are the tangent, with the tangent around the both sides of the fold, and between these tangent the angle is called the interleave angle. On the basis of interleave angle ये डिफाइन हो जाता है कि हमारा फोल्ड कितना टाइट है. पहला जेंटल, इसका इंटरलेव एंगल 180 से 120 डिग्री, ओपन 120 to 70, क्लोज 70 to 30 and tight 30 to less than 5 डिग्री. 0 डिग्री आइसोक्लाइनल होता है. नेगेटिव एंगल्स जब मशरूम से या इलास्टिक इससे बोलते हैं. Hinge. The radius of curvature of a fold surface varies progressively from point to point. The point with the smallest radius of curvature in a hinge, it is flanked by two areas. Hinge में smallest radius of curvature होता है, maximum radius होता है, जबकि limb में maximum radius of curvature होता है, smallest radius होता है. Is flanked by two areas with the larger radius of the curvature. The limb, the inflection points are points of zero curvature, where the sense of curvature changes from a convex to convex line. They usually are aligned on either limb of a fold. If the limb has a straight segment, its midpoint is conventionally taken as the inflection point. The point of maximum curvature of a folded layer is located in the center of the hinge bone and is called the hinge point. Hinge points are connected to three dimensions of a hinge line. The hinge line is commonly formed to be curved, but where it is appear as a straight line, it is called a fold axis. The line going for the maximum curvature and minimum radius of the curvature is called the hinge point. If this hinge line is straight, तो इसे fold axis बोलते हैं. The fold axis is the most important structural element of the fold because it shows the direction of maximum continuity of this fold. Some folds example for several hinge lines.
ये फोल्ड एक्सिस है जिसमें ये हिंज लाइन स्ट्रेट है और यहाँ पे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये इसे सिलेंड्रिकल फोल्ड भी बोलते हैं। नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड में जो हिंज लाइन है वो इसमें फोल्ड एक्सिस नहीं पाया जाएगा जबकि इसमें स्ट्रेट हिंज लाइन नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट से वेदर कर्वेचर इज जीरो, दिस इज लिम, ये हिंज जोन है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट से हिंज जोन ये हो गया। किंग बैंड जहाँ पे शार्पली चेंज होता है इस तरीके से लिम का चेंज होना किंग बैंड कहलाता है। ट्रेसेस ऑफ बाइसेक्टिंग सरफेस, एक्सियल ट्रेस इसे बोल सकते हैं। फॉक्स फोल्ड में कई हिंज लाइन होती है, ये एक्सियल ट्रेस हुआ, कई फोल्ड एक्सेस होता है। इन सब फोल्ड्स हैव सेवरल हिंज लाइंस, इसका मतलब इसमें फोल्ड एक्सेस भी कई हुआ। कॉन्सेंट्रिक फोल्ड इस तरीके का फोल्ड होता है, ये कॉन्सेंट्रिक फोल्ड और पैरेलल फोल्ड के बारे में आगे बढ़े। चेवरॉन फोल्ड एक शार्प हिंज लाइन इसमें होती है चेवरॉन फोल्ड में। इसके बाद आता है एक्सियल ट्रेस। द एक्सियल ट्रेस ऑफ अ फोल्ड इज अ लाइन दैट लिंक्स ऑन द ग्राउंड सरफेस पॉइंट्स ऑफ द मैक्सिमम कर्वेचर ऑन अ सक्सेसिव फोल्डेड सरफेस। Axial trace is the intersection of the axial plane of the fold with the surface of observation, and it can be found by the connecting the hinge points of the fold on the surface. Fold axis is an imaginary straight line parallel to the hinge line of the fold and only found in the case of the cylindrical fold, and also generates the fold by moving parallel itself. तो एक्सियल ट्रेस इस तरीके से फोल्ड सरफेस तो लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम कर्वेचर दैट इज द हिंज पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल ट्रेस। फिर ग्राउंड सरफेस ये, फिर इसके स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर देखते हैं तो ये हमारा एक्सियल सरफेस है, ठीक। तो एक्सियल ट्रेस भी है, तो इसमें जो बी एक्सिस है वो हमेशा यहाँ पे आता है, इसे सिलेंड्रिकल फोल्ड बोलते हैं। लिंब हो गया सिलेंड्रिकल फोल्ड। नेक्स्ट इज द दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोल्ड फेसिंग एंड फोल्ड वर्जेंस। डायरेक्शन ऑफ यंगिंग अलोंग द फोल्ड एक्सिस इज कॉल्ड द फोल्ड फेसिंग। ये हमेशा यंगिंग डायरेक्शन की तरफ एरो ऊपर की तरफ से करता है और फोल्ड डाउनवर्ड और टुवर्ड्स द जियोग्राफिक। फोल्ड फेसिंग और फोल्ड वर्जेंस is related to the direction of stratigraphy। ये हमेशा जो ऊपर की तरफ हो रहा है ये यंगर रॉक को शो करेगा, नीचे की तरफ ओल्डर रॉक में। यही फोल्ड डायरेक्शन ऑफ यंगिंग रॉक along the fold axial surface. Fold versus the sense of symmetry appear to the shear of the upper side of the layer related to the lower. रोटेशन डिफ्लेक्शन ऑफ एक्सियल सरफेस। फोल्ड वर्जेंस रोटेशन से शो करता है कि इसमें द सेंस ऑफ सिमेट्री है, सीएस ऑफ द अपर साइड ऑफ द लेयर रिलेटेड टू द लोअर। सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन क्या होता है? सिंक्लाइन इज अ फोल्ड विद द यंग लेयर्स ऑफ द रॉक क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। ये सिंक्लाइन या बेसिन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे फोल्ड विद द यंगर लेयर ऑफ रॉक क्लोजर टू द, यहाँ पे यंगर रॉक होती है। एंटीक्लाइन इज ए टाइप ऑफ द फोल्ड दैट हैज एन आर्क लाइक शेप। एंटीक्लाइन इस तरीके से होता है, यहाँ पे ओल्डर रॉक होती है, सिंक्लाइन में इसमें उल्टा हो जाएगा। मोनोक्लाइन इज ए टाइप ऑफ द फोल्ड दैट इज स्टेप लाइक स्टेटस स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम द क्रेस्ट, has a trench like pattern, has a arc like pattern, status slope downward from the crest। फिर ये हो गया स्टेटर आइदर यूनिफॉर्मली डिफरेंट, हैज ए स्टिफ लाइक पैटर्न। मोनोक्लाइन में इस तरीके से होता है। ये आउट लेयर एंड इन लेयर है। इसमें एक चीज़ याद करने चीज़ है कि आउट लेयर और इन लेयर क्या होता है। इट इज एन आइसोलेटेड पैच ऑफ यंगर रॉक्स सराउंडेड बाय द जियोलॉजिकली ओल्डर रॉक्स ऑफ our slides as shown in figure 4. This happens generally on a high grounds due to excessive erosion on all
sites where certain patch proves resistant to weathering. फिर इनलेयर क्या होता है? इट इज आउटक्रॉप ऑफ ओल्डर रॉक्स स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय जियोलॉजिकली यंगर रॉक्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ द shown that is in figure 5. Inlayer is also a result of degeneration found in the valley and depression. इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है YOH. यंगर रॉक इज सराउंडेड बाय द ओल्डर रॉक. O फॉर द आउटलेयर. ये फॉर्म करता है हिल. और जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा इनलेयर, यानी यहाँ पे वैली हो जाएगा, यहाँ पे यंगर हो जाएगा, यहाँ पे ओल्डर हो जाएगा. Dip and upper and dip here, the dip, the inclination of the bedding planes with the horizontal is called the dip and is always expressed in the degree in shown in the figure 1. इसमें जो दिखाया गया है इस तरीके से. While studying the geological maps, we come across the following two dips and upper and dips. Technical terms: two dip, it is a maximum inclination of the bedding planes with a horizontal, or in other words, it is the inclination of direction of which water would flow if poured on the upper surface of the bed. For example, if a bed dips to 20 degree. जनरली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टू dip it is maximum inclination of the bedding planes with the horizontal, or in other words, it is inclination of the direction in which water would flow if poured in the upper surface of the bed. For example, if a bed dips towards 20 degree is 25 degree versus 20 degree, and 20 is not in the two dip bedding planes just because of the inclination of the bedding planes is maximum in the direction. Upper and dip is the inclination of the bedding planes with the horizontal or in any other direction other than the direction of the two dip is known as the upper and dip. It is thus obvious that the values of the upper and dip is always less than the two dip unless specified otherwise. The value of the dip is always taken as a two dip and not as upper and dip. स्ट्राइक क्या होता है? इट इज द डायरेक्शन मेजर्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए लाइन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिपिंग बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. A little consideration will show that the strike line is a level line and can be imagined as a contour line for the surface. In figure 2, the strike is north and dip is 45 degree east. It may be noted that the strike is always at right angles to the tip of the bed. A special dip is a strike symbol is used to geologic map, so attitude of the bed. The longer line is parallel to the strike of the bedding, whereas the shorter points in the dip. क्या होता है? The inclination of the bedding planes with the horizontal is called dip. अगर एक्सप्रेशन डिग्रीज एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्राइक लाइन होते हैं क्योंकि ये एक इंटरसेक्शन से बनता है हॉरिजॉन्टल बेड और इंक्लिनेशन बेड के. यहाँ पे 0 डिग्री डिप होती है. स्ट्राइक एंड डिप्स को इस तरीके से शो किया गया एक इसमें. पिच क्या होता है? पिच इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द फीचर एंड द स्ट्राइक ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि ये लिनिएशन फीचर है. ओके, इसमें मैंने एक स्ट्राइक लाइन खींच दिया तो ये एंगल जो है दैट इज द पिच. The pitch is always acute angle, which is the line element in the rotated direction of two dip of the containing plane. As an example, hornblende grains may be a distinct lineation, a plane which is a plane of sistercity. The angle that the linear hornblende crystal make the strike of the cyst within the plane of sistercity is a rake or pitch. Rake generally उसमें यूज होता है फॉल्ट में और पिच फोल्ड में, बट द प्लेन द लिनिएशन ऑफ दीज हॉर्नब्लेंड क्रिस्टल विल बी मेजर्ड इन द वर्टिकल प्लेन. पिच जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में हो सकता है, जबकि प्लेन जो है वो मस्ट बी इन वर्टिकल प्लेन होना चाहिए. 2 मिनट अब आते हैं प्लेन्स में.
Plunge is the vertical angle between the horizontal plane and the axis or line of maximum elongation of feature. Plunge is measured along the axis of the fold, whereas the dip is measured along the length. ये एक नॉन प्लंजिंग फोल्ड है क्योंकि ये फोल्ड एक्सिस इसके पैरेलल हो गया है. ये एक प्लंजिंग फोल्ड है क्योंकि इसमें हिंज लाइन और इसके बीच में जो स्ट्राइक लाइन हॉरिजॉन्टल से करेंगे, ये दैट इज प्लंज एंगल. हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक्सियल प्लेन है, ये फोल्ड है. तो प्लंजिंग फोल्ड इस नॉन प्लंजिंग फोल्ड इस तरीके से शो करेगा मैप में, प्लंजिंग फोल्ड इस तरीके से शो करेगा. Thank you. If you are really enjoy this video, it's a quick revision of the fold parts of the fold. Next we will understand the detailed fold structure and parts of the fold. If you really enjoy this video, please like, share and subscribe. Thank you.